पेटीएम पे राय मांगी जा रही है, आप देंगे क्या? Okay, so basically, देखिए, I think the IPO, in hindsight, obviously, you can always say was overpriced. There was very little left for the retail investors on the table. However, these new age businesses, it's very difficult to take a call on it because देखिए, it's not just about Paytm. It's about any other new age, new digital business which is getting listed or which will get listed. उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब हम्म। कब वो एक्चुअली नेट प्रॉफिट कमाने लगेंगे। नेट कंट्रीब्यूशन करके उन लोगों ने एक डेफिनेशन बनाया है अपना कि उनका नेट कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज फ्लाइंग वेल विद द इन्वेस्टर्स। हैविंग सेड विच, पेटीएम के साथ में आई थिंक एक दो और थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं या अभी वो लोग को एड्रेस करनी है। वो ये कि वो किसी भी सेगमेंट में मार्केट लीडर नहीं है। लीडर नहीं है। Zomato is a market leader in food delivery. Nykaa is perhaps a market leader in e-com, digital, fashion, accessories, or whatever, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। beauty products, right? या। Sorry, right. But Paytm, uh, and it's a debatable thing. I've heard many interviews of the Paytm management. They say they are the market leader, but market doesn't consider them to be a market leader in the payments business. I think they are third now because UPI के आने से market का equation काफी change हो गया. हालांकि Paytm is also a bank technically, and they have a different mechanism of funds transfer. They are not the market leaders. They are actually distant players in financial services. And when it comes to wealth, insurance, उनका एक e-com साइट भी था, वहां पर भी they are not the leading players. तो market A is confused about the business model या कहां पर वो market leadership में है, because अगर आपके पास में profitability नहीं है तो at least market leadership तो हो, that you can convert that market leadership into profitability at certain point in time, right? So वो वहां पर नहीं है. In case of Nykaa, at least you have certain profit. उनका profit कुछ 2-4 करोड़ था क्वार्टर का, साल का लास्ट ईयर 30 करोड़ था। 30 करोड़ के प्रॉफिट पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, विच इज लाइक 2000 टाइम्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. सो वैल्यूएशन वाइज यू कांट जस्टिफाई, बट एटलीस्ट दे हैव अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी. पेटीएम के केस में द प्रॉब्लम विद इन्वेस्टर्स इज दे डोंट हैव अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी. उनको पता नहीं है कि प्रॉफिट कब आएगा और किस बिजनेस से आएगा, right? That's the whole problem. Yeah. Basically, once Even you I get was more hearing clarity. the interview एक किसी चैनल पे ही, बिजनेस न्यूज चैनल पे, मैनेजमेंट का, आई थिंक सीईओ वाज टॉकिंग, एंड द होल इंटरव्यू मुझे लगा कि वो एक किसी भी सवाल के जवाब में क्लियर कट आंसर जो कन्विंस कर सके कि हाँ ये कंपनी क्या कर रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। इनफैक्ट इस सवाल का जवाब भी कि आने वाले वक्त में रेवेन्यू किस काम से ज्यादा आएगा, वो उसका जवाब तक भी उनके पास क्लैरिटी नहीं थी। एंड दैट वो बहुत अच्छा एक इमेज आपका नहीं बना रहा है एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में। उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि ये पैसे बनाएंगे कहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। Yeah. So look, finally, the good part, also the good part, I should say, the good part about tech businesses who own tech in-house is that they can navigate the business cycles and they can change business models as per the new age technology and the way world is adapting to newer ways of finance or investments or banking or payments or anything, right? तो वो edge Paytm के पास में हमेशा रहेगा, and that's the reason why stock is where it is today, right? उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, but the moment they figure out revenue model and profitability, I think it can become a good stock. But till then, I think it's a clear avoid. I've read, I think yesterday I was reading something और वहां पे किसी ने कहा था कि many IPOs, particularly in tech, are built on hope and poor cash, while the companies are still losing money. Do you agree with this? Yeah, so देखिए, that's a reality, right? इसमें मेरे agree ना agree करने से कुछ नहीं होगा, because finally it's a reality. It's not just a reality of India, it's a reality globally, right? You see the way Tesla is listed, का market cap, जिस तरह से Tesla is bigger than all listed auto companies in the world put together, right? Or the top three auto companies, Ford, Toyota, all put together, right? So there is a different way of this game is getting played. If you are a market leader, if you have superb tech capabilities, basically the way the world is going digital, these are very new age businesses and there is a very new way of doing business out here, right? Profitability people can still ignore for some time. Obviously it can't be ignored for a very long period of time. Finally the fundamentals will catch up. But if you have other ingredients in place, if you have the market leader, if you have a clear targeted market segment for yourselves, if you have a good business model, and if you have an in-house tech, and if you have the path
to profitability, I think markets are still willing to accept it, still willing to take a bet on it.